Hello everyone, and a very good morning to all of you, and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 9th October, and we are here with the Hindu analysis of 9th October, that is Monday. Okay. So I hope you are aware that these two are articles. So this is actually slightly a political article. NC, that is National Conference and Congress Alliance, sweeps Kargil election, wins 22 out of 22 seats, 22 out of 26 seats. BJP wins 2. So इसको आप पढ़ लेना थोड़ा सा. This is an election that happened in the Kargil district. Okay, so just go and read about it. The next NC is National Conference. Okay, which is a political party of Mr. Farooq Abdullah and all. Okay, yes. Now the next one is this was an article. It has been in the news for the past 1 or 2 days. Israeli airstrikes and all. So I hope you are aware. So in this actually we will be discussing some important questions which will be important from your exam point of view. Okay, so Indians asked to remain in contact with the embassy and all. That is what it was in the news. Let's start with the first question. What is the name of the water body that touches the Gaza Strip? Your options are Sea of Galilee, Caspian Sea, Dead Sea, Mediterranean Sea. So read the options carefully and then answer it. So these are your options. Your time starts now. बताइए. Anyone? What is the right answer? So this I have discussed it in the past as well, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. देखो, this is not a Red Sea, this is Dead Sea. Be careful. देखो, आपको ये सब मैप जो है एकदम क्लियर होना चाहिए. Gaza Strip, where do you find and all. Yes, Nandana is right. The right answer is Mediterranean Sea. So D is the right answer to this question. Okay, yes, Soumya Sharma is also right. So let me show you on the map first. So here is, you'll find India, and this is Israel. Okay. So this is Israel and here is Mediterranean Sea. So let me zoom it. So this is actually, देखो ये जो है ना ये, this one is Sea of Galilee. Okay, this one is Dead Sea. Okay, and this one is Gaza Strip. ये वाला Gaza Strip होता है. And this water body is Mediterranean Sea. So Gaza Strip is touching Mediterranean Sea with actually, so the right answer is Mediterranean Sea. Okay. Now let me tell you. So this is Gaza Strip, and this is called as West Bank. So West Bank and Gaza Strip is generally together called in today's term. Today it is the region of Palestine. Okay. So just have an idea about it. मैंने बता दिया Dead Sea, शुभराज. I have told you. ठीक है. और यहीं पर एक river है, बहुत famous river है. That's called as Jordan River. It goes like this. Okay. Sea of Galilee, Dead Sea, Jordan River. ठीक है. And here is Mediterranean Sea. Okay. Now, so there are some more questions regarding this war. I mean, in the past also there have been some wars. So 6-day war between Israel and Palestine happened in the year. Your options are 1967, 1948, 1973, 2009. What is the right answer to this question? Yes, Aman will be coming to that. ठीक है, इस पर भी आऊंगा. 6-day war between Israel and Palestine happened in the year. Anyone? So the right answer is 1967 war ko. Okay, so there have been some wars like 1967, 1948, 1973. These are the famous wars that happened, I mean, in the year, these years between Israel and Palestine. So A is the right answer to this question. Okay, so just have an idea. 1967 Arab-Israel war is there. Now, so if you see it, this map was very much coming in the news. So this was around 1947. So the green region is of Palestine and white region is of Jewish settlement. So over the time, the Jewish settlement area started increasing, and this is the present scenario. मैंने अभी आपको बताया, this is the present scenario where this region is actually West Bank, and this region is Gaza Strip. And from present day scenario, these two together are called as Palestine region. The rest white region,
is actually the Israel, the country called as Israel. Okay, and somewhere here you will find it, Jerusalem. So we'll be coming to that also. Jerusalem is a holy site for three religions. We'll be coming to that. Now, the next question is 1973 war is famously called as what? Your options are Bethlehem War, Crusade, Yom Kippur War, none of the above. ओके एक 1967 में वॉर हुई थी, फिर एक 1973 में भी वॉर हुई थी, ठीक है. इसको क्या कहते हैं? 1973 वॉर इज फेमसली कॉल्ड एज, नहीं गौरी सेठी, वो 1967 में हुआ था, उसका 50 ईयर्स कंप्लीट हुआ था 2017 में, ठीक है. और 1973 में जो वॉर हुआ था उसका 50 ईयर अभी कंप्लीट हुआ है 2023 में, ठीक है. ओके, यस. Okay, yes, that's called as Yom Kippur War. So C is the right answer to this question. This happened in 1973 and recently you can say actually अगर आप देखोगे गौर से 6 अक्टूबर को 50 years complete हुआ था and 7th अक्टूबर को again the attack happened. जो अभी recent attack हुआ है वो 7th अक्टूबर को हुआ है. So almost after the completion of 50 years this attack again happened and all. So the right answer is C is the right answer to this question. This is linked with this oil crisis. जैसे योम किपुर वॉर के बाद देयर वाज एक्चुअली एन ऑयल क्राइसिस दैट हैपेंड. ये बहुत फेमस है. इवन इन इंडिया आल्सो द प्राइसेस गॉट इंक्रीज, द ऑयल प्राइसेस. इफ यू आस्क योर पेरेंट्स, गो एंड आस्क योर पेरेंट्स आफ्टर द क्लास इज ओवर दैट अराउंड 1973 द ऑयल प्राइसेस बिकेम डबल, ट्रिपल, 4, 3, 4 टाइम्स. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. ओके, इसमें कोई ज्योग्राफिकल टर्म्स है. एक है सिनाई पेनिनसुला, दूसरा है गोलन हाइट्स. ओके, so these are geographical terms. Go and find out the location of it. Sinai Peninsula किसको कहते हैं, गोलन हाइट्स किसको कहते हैं, गाजा स्ट्रिप वगैरह तो मैंने बता भी दिया, ठीक है. ओके, सो गो एंड फाइंड आउट. नाउ ये था इंडियन asked to remain contact with embassy and all, so that is what the Minister of State for External Affairs Mr. V. Muralidharan has said. Okay, so just have a basic idea about it. Now the next question is, what do you mean by the term intifada? Your options are it is an Arabic word that means to shake off. It is a Hebrew word used to counter a strike against Hamas. Past treaty between Israel and Palestine. War of our Jewish homeland. Your time starts now. बताइए. What is the right answer? My parents were not born in 1973. अच्छा, 1973. Go and ask your grandparents. I'm very sorry. Grandparents से आप पूछोगे, not your parents. ठीक है. सो अपने ग्रैंड पेरेंट्स अगर if he or she is alive, go and ask them and ask कि after 1973 the prices of oil went very much increased 3-4 times I guess just after that. So it, I mean, affected India also, of course, when the price rise happens. Okay, yes Rashmi Khan, that session will be happening. Yes, हाँ. So what is the right answer? What is the meaning of intifada? ये कई बार न्यूज में रहता है. Yes, Gauri said it right. हाँ, A is the right answer, not 4. Intifada is an Arabic word that means to shake off. तो ये देखो, जैसे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल हमास इजराइल एस्केलेशन व्हाट वी नो सो फार, तो इसके आर्टिकल में ये वर्ड इंतिफादा मेंशन था इंडियन एक्सप्रेस के. और दिस टर्म इज यूज्ड सिंस 1987, सो मे बी दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है. सो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. नाउ इससे रिलेटेड और भी कुछ टर्म्स है. जैसे एक फेमस अकॉर्ड है, उसको कहते हैं ऑस्लो अकॉर्ड. कोई जानता है? ये 1990s में साइन किया गया था. There is a term called as Oslo Accord. Please go and read about it. और ये बहुत सारा है, जैसे कैंप डेविड अकॉर्ड है, ऑस्लो अकॉर्ड है, ठीक है. तो कैंप डेविड अकॉर्ड तो आज हम लोग एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे, बट देयर इज ऑस्लो अकॉर्ड आल्सो रिलेटेड विद इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट. सो गो एंड रीड समथिंग अबाउट इट, ठीक है, उसको भी पढ़िएगा. ओके, लेट्स मूव ऑन. तो एक और था, डेथ टोल राइजेस टू 2000, एट लीस्ट 10,000 इंजर्ड. सो देयर हैजंट बीन एनी अर्थक्वेक इन अफगानिस्तान. सो कितना मैग्नीट्यूड का है, कोई बता सकता है रिक्टर स्केल? So here is India, this is Pakistan, this is Afghanistan. So अफगानिस्तान ये है, इसके वेस्ट में एक जगह है हेरात. So almost around 40 kilometers from हेरात, ये यहाँ पे ना अफगानिस्तान है, यहाँ पे हेरात है. इसके around 40 kilometers away, almost around 6.3 magnitude earthquake hit Afghanistan. Okay, so over 2,000 dead in Afghanistan. The earthquake houses flattened, Taliban seeks help and all. So this was very much in the news.
So the epicenter is 40 kilometers from the northwest city of Herat. So just have an idea about it, that an earthquake has happened in this region and all. Okay. Now earthquake happen होने का रीजन क्या है, आपको पता है रीजन? देखो होता क्या है, माउंटेनियस रीजन में, जैसे आपको पता होगा जैसे हिमालय या, ठीक है, फिर यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारी पहाड़ी है वेस्ट में. ओके, सो गो एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ माउंटेन्स विच आर इन दिस रीजन. यहाँ पे है, फिर चाइना में जाती कुल्लुन शान. यहाँ पर एक चीज बनता है उसको कहते हैं पामीर नॉट. यू नो दिस, इसको पढ़िएगा व्हेन यू गेट अ चांस. सो माउंटेन रेंज यहाँ से बहुत सारा शुरू होता है इस रीजन से, जस्ट नॉर्थ ऑफ यू कैन से जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल. दैट्स इन ज्योग्राफी कॉल्ड एज पामीर नॉट. ठीक है. Okay, so let's talk about it. Indian leaders wield new digital megaphone. Actually ये WhatsApp चैनल की बात है. I think अभी recently कुछ नया WhatsApp ने निकाला है. There is something called as WhatsApp channel, right? शायद किसी ने WhatsApp चलाया तो देखा होगा. So that is what is being talked about. So political leaders are quietly establishing a base in WhatsApp channel and all as. ठीक है. So बहुत सारे लोगों ने अपना WhatsApp channel, celebrities, famous celebrities have made this and all. So this was in the news. Okay. The next is yes, कोई बच्चा पूछा था, yes, Monday को 6 PM पे, as we all know, we are having a revision session on our app. ठीक है. So आज भी होगा, of course. So please do join it. That would be very very beneficial. क्या करना, बस download the app, go to CLAT section, है ना, and from there actually you can watch our live sessions. Okay, the next is the year 2025 का comprehensive course है. Those who are planning for next year, he or she can go for it. You can call on this number 9538895678. और ये 2025 का टेस्ट सीरीज, 2024 का टेस्ट सीरीज है. Those who have attempted it, please, those who have bought this और जो पेड बैच के स्टूडेंट हैं, please attempt it. We have got to know that many of them are not attempting it, so which is not very good thing. आप लोग जरूर attempt कीजिए, please attempt it, because that would be beneficial for you. Now let's talk about editorial, a census for a new deal. So basically आपको पता है, this is actually talking about the caste based census, है ना. So actually recently the Bihar government has decided to conduct caste based census. People filed challenge this in Patna High Court, then they went into the Supreme Court, but finally the Supreme Court allowed it, right? So this is what he's talking about and all. थोड़ा सा ये sociology aspect पे जा रहे हैं, ठीक है. This is a topic of sociology and all. The unfurling of the contesting flags of caste and religious identity and all, ठीक है. So to an ethnic identity and all. तो अब देखो इससे related उन्होंने कुछ चीजें discuss की है, which becomes a question here. What is the name of the second backward class commission whose implementation led to the reservation for OBCs 27%? Your options are 𝗂𝗂-𝗏𝗏𝗀 commission, Mandal commission, Swaran Singh committee, none of the above. Your time starts now. I think ये आसान question होगा. बताइए. नेम ऑफ सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन. हाँ बहुत फेमस है. शायद फर्स्ट वाला नहीं पता होगा लोगों को. ये फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन थे ना. सो 𝗂𝗂-𝗏𝗏𝗀 कमीशन वाज फर्स्ट बैकवर्ड क्लास. आई एम आस्किंग सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन. मंडल कमीशन किसने सेटअप कराया था, कौन से, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, इन विच ईयर? सो बेसिकली इट वाज सेटअप इन द ईयर 1979 बाय प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई. ओके, chaired by a member of parliament called as Mr. B.P. Mandal. He was an MP. Now, so he submitted the report in 1980 and it recommended reservation for OBCs. But when it submitted the report in 1980s, the government did not implement it. However, in 1990, almost after 10 years of it, after 10 years of B.P. Mandal report being submitted to the president, the Prime Minister VP Singh announced to implement the Mandal Commission. I hope you are aware of this. उसके बाद एक केस फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, बहुत फेमस हुआ था. What is the name of that case in Supreme Court? It is famously called as Mandal case. But what is the original name of that judgment? कोई बता सकता है उस जजमेंट का नाम? मंडल केस कहते हैं हम लोग फेमसली, बट देयर वाज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ दैट जजमेंट. सो ये वो बता रहे मंडल वर्सेस मंदिर एंड ऑल्सो 1990s में ये पॉलिटिक्स बहुत फेमस हो गई थी. So Mandal politics. So Mandal politics means the rise of OBCs. Rise of OBCs in politics, in Indian politics इसको कहते हैं. अगर आप sociology पढ़ोगे, you will get to know this. Why? Because क्या हुआ कि when Mandal Commission was implemented, reservation of OBCs was implemented. So when reservation of OBCs was implemented, assertion of
caste identity or OBC identity happens. Okay, so a lot of OBC political leaders, a lot of political parties were set up by OBC leaders and all. Okay, and at the same time 1990s में the Mandal issue and Mandir, है ना? So Mandir 1990s में and all it became more prominent and all, the demand for Ram temple and all. Okay, yes. हाँ, तो एक्चुअली इसको कहते हैं एक केस था जो मैंने बताया था, इंदिरा सानी केस. यस, बहुत सारे लोगों ने लिखा. ठीक है, ठीक है. सो इंदिरा सानी केस आई थिंक 1990, आप चेक कर लेना 92 या 93 का ईयर चेक कर लेना. ठीक है, 1990s में ही था, वही है मंडल केस एंड ऑल. ठीक है, हाँ. ओके, सो फिर वो बता रहे मंडल 2.0 मतलब ये कि अगेन देयर विल बी द राइज ऑफ ओबीसी और एंड ऑल. तो ये सब चीजें बता रहे हैं. देखो एक्चुअली क्या है कि बेसिकली मंडल पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि राइज ऑफ ओबीसीज, है ना, इन द पॉलिटिकल सिस्टम एंड ऑल, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, असर्शन ऑफ बैकवर्ड क्लास एंड ऑल. तो एक्चुअली बिहार कास्ट सर्वे क्यों करवाया गया? So there are not of reasons. देखो अगर आप देखोगे, if you see it carefully, this is the result of it. So 15% are actually 15.5% are actually general caste. Rest जो भी almost 84-85% है, they will be considered as a backward class. Okay, if you see it carefully. So 27% is OBC. और एक concept है EBC का. This is actually a sub category of OBC. उसी में से निकल के आया. And this is in बिहार. ये all India level पर EBC का concept नहीं होता है, but बिहार में लाया गया. So 36% is there. शेड्यूल कास्ट इज 19% एंड शेड्यूल ट्राइब इज 1.68%. तो आप टोटल जोड़ोगे सो समवेयर अराउंड 84 पॉइंट समथिंग % आएगा. ठीक है, और अपर कास्ट और ये जनरल कास्ट जो है, जनरल कैटेगरी इज ओनली 15.5%. सो बेसिकली that is what the Mandal politics. The Mandal politics, those who actually are the result of Mandal politics, they will always want that if there is more OBCs in the state, there should be a caste census. So that we can get to know about the caste and all, that how many caste and all is there. ठीक है, इसमें पूरा सोशियोलॉजी है, इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है. ठीक है, so that is what he is actually talking about. फिर ये Pew Research Center को कोट कर रहे हैं कि in lockdown COVID-19 a lot of people went back to the poverty and all. ठीक है, so that is what you should be knowing it. फिर वो एक ऑथर मनीष के झा ऑथर है, उनकी किताब कोट कर रहे हैं. तो इतना डिटेल आपको नहीं जाना है. ठीक है, कि 55% of upper caste fall in the upper middle class compared to 3% of OBC and 1.4% of Dalits. तो ये सब बता रहे हैं कि जो बेटर मतलब प्रोग्रेसिव है, यानी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसमें ज्यादातर अपर कास्ट के लोग हैं एज कंपेयर टू द लेसर एंड ऑल. सो उसमें वही सब कोटिंग है. ठीक है, एक बेसिक आइडिया इज मोर देन इनफ. इसमें कुछ चीजें पता होना चाहिए, जैसे लास्ट कास्ट सेंसस कब हुआ था इंडिया में, व्हेन इट हैपेंड. ठीक है, सो ये सब चीज पूछी जा सकती है. ओके, एक और क्वेश्चन है, सेंसस जो है वो कौन से लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है. That census comes under which list and ठीक है, what's the need of caste census? देख उससे ये पता चलता है कि कितनी % कास्ट कौन सी है. ओके, बेसिकली द रीजन इज टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन अकॉर्डिंगली, कि कितना % रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, वो इस बात से पता चलेगा कि कितनी % कास्ट है. ओके, सो दैट इज व्हाट दोज हु फेवर द कास्ट सिस्टम, सॉरी कास्ट सर्वे, they say that it is important to get to know that how much population of which caste is there in order to implement reservation. Okay, उसमें बहुत सारे डिबेट है, उस डिबेट पे नहीं जानना है. some there are people who support it, there are people who oppose it. ठीक है, so we are not going in that debate. खैर, ओके, हाँ, यूनियन लिस्ट में आता है सेंसस. ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा. and which ministry conducts the census at all India level, ये भी पढ़िएगा. ठीक है, okay, let's talk about this Tufan, Al-Aqsa, George West Asian geostrategic architecture and all. Now the author is talking about Camp David Accord in 1978. So it happened between which two countries? Your options are Israel and Palestine, Israel and UAE, Israel and Egypt, none of the above. Your time starts now. बताइए. हाँ, census is done under Home Ministry. Yes, Gauri Sethi. Good. Nandana, you are also right. हाँ, census is comes under Home Ministry. कैंप डेविड अकॉर्ड 1978 बहुत फेमस हुआ था. एनीवन, कैंप डेविड इज एक्चुअली अ प्लेस इन यूएसए वेयर एक्चुअली दिस अग्रीमेंट वाज डन. इजराइल एंड इजिप्ट, वेरी गुड. यस, गौरी सेठी, अमन भागव, राइट. इजराइल एंड इजिप्ट इज द राइट आंसर. देखो इस पर क्वेश्चन आया था, अब्राहम अकॉर्ड 2020 में हुआ था. ओके, नाउ इजराइल इजिप्ट का जो है सी इज द राइट आंसर, कैंप डेविड अकॉर्ड. सो देखो आपने देखा होगा
first of all let me show you. देखो ये है Anwar Sadat was there, Egyptian president, and Israeli prime minister, both did in 1978. Camp David, there was a deal was done in that place. Camp David is a place in USA. Okay, now Anwar Sadat was given Nobel Peace Prize for that and all. Okay, so basically if you see here is Israel, उसी के बगल में Egypt है ये पूरा, ठीक है. So this is the Egyptian region and all. Okay, now देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो ये 2020 में क्वेश्चन आया था अब्राहम अकॉर्ड पर. So which was between Israel and UAE. Israel and UAE. Okay. So UAE was the second Muslim nation to do a deal with Israel. And the first one, if someone is asking, will ask is, then the answer is Egypt. And that's Camp David Accord. Okay? Is it clear? So you should be knowing it. Maybe they can ask it. So यही वो बता रहे हैं. ठीक है. So he's talking about Camp David Accord and all. That is what. Then Yom Kippur War ka 50 years complete हुआ है recently, and the attack has happened and all these things was in the news and all. From a military perspective, yes, despite the fighting on Israel is not under existential threat and all. So यही सब बता रहे हैं कि let's wait for it, है ना? So that yes, Hamas has attacked it, but yes, Israel may be able to counter it. So these are the things he is talking about. The shock and awe. Shock मतलब awe मतलब होता है डर, fear. Shock मतलब आप समझते हैं shock. ये जो टर्म है ना, ये टर्म जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये टर्म बहुत फेमस हुआ था. ब्लिट्जक्रिग, आई थिंक इट्स अ जर्मन वर्ड यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिटलर एंड ऑल. ब्लिट्जक्रिग मतलब होता है सडन सरप्राइज अटैक, सडन सरप्राइज मैसिव अटैक. दैट्स कॉल्ड एज ब्लिट्जक्रिग. इस तरह टर्म दिया था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी फेमस हुआ था. ओके, वेस्ट बैंक इज रन बाय अल फतह एंड बॉर्डर्स फॉरवर्ड विद इजराइल ऑक्यूपेशन एंड गाजा एडमिनिस्ट्रेटेड बाय हमास. मैंने बताया है. सो दिस रीजन एक्चुअली दिस इज गाजा रीजन, इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय हमास. एंड दिस ये वाला जो वेस्ट बैंक टेरिटरी, ये वाला वेस्ट बैंक, ओके, दिस इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय अल फतह व्हिच इज अ पार्ट ऑफ PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन समथिंग करके. ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. ये वो बता रहे हैं. देन द ओनली अरब नेबर ऑफ गाजा इज इजिप्ट. हाँ, नाउ व्हाई इज इजिप्ट सो इंपॉर्टेंट? इसलिए कि गाजा का जो पड़ोसी है, एक पड़ोसी जो यहाँ बगल में, वो इजिप्ट है. ओके, सो जब वॉर हुई थी ना 67 या 73 वॉर, यू विल सी इट, तो उसमें भी पता है ये इजिप्ट पर इंपैक्ट पड़ा था एंड ऑल. ठीक है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, अदरवाइज इट विल बिकम अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड ऑल. हाँ, ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. वो बहुत लंबा चौड़ा हिस्ट्री, इट्स अ बिग लॉन्ग हिस्ट्री एंड ऑल. In fact, it is said that Iran has also supported it and all. These are the things that were coming in the news and all. Now, a double or quits option. The crisis effectively presents Israel's current 10-month-old ultra-nationalist government. 10 months old. Actually, क्या हुआ था last year December में? Benjamin Netanyahu again came to power. Okay, so that is what they are calling it as 10-month-old ultra-national government with a double or quits and all. So even before Tufan al-Aqsa, Jerusalem's hardline has led to surge in violence and all. So slightly since the current government in Israel is according to the author ultra-nationalist and all. So it has killed almost around 200 Palestinians and 30 Israeli dead this year. मतलब इस अटैक से पहले already कुछ violence वगैरह हुए थे and all. So that is what they are saying it. In fact, this was coming in the news last month. Mossad is actually a former intelligence agency of, I hope you are aware, Israel. So this was coming in the news. In fact, a former Mossad chief has said that it is imposing apartheid and all. So ये आप जानते हो क्या? I hope you are aware this was the concept in Africa and all. I hope you are aware of that. तो यही सब चीज वो बता रहे हैं that these are the things it was in the news. Fair. Okay. Now अब देखोगे इसमें जो एक रिलीजियस चीज है, जो कोई बच्चा पूछ भी रहा था. देखो यहाँ पर दिस इज वेस्ट बैंक. यहाँ पर आपको जेरूसलम मिलेगा. ओके, नाउ जेरूसलम में ये जगह है. दिस इज एक्चुअली द प्लेस which is important for all the three religion. There is a concept called as Abrahamic religion. So Islam, Christianity and Judaism, these three are called as Abrahamic religion. Okay, Islam, Christianity and Judaism. Judaism समझते हो, जो the religion which is followed by the people of Israel. Okay, Jews जिसको कहते हैं, the followers are called as Jews. इसराइल, ठीक है ना. सो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म को अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं. सो दिस प्लेस एक्चुअली, दिस रीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द थ्री रिलीजन. और यहाँ पर एक्चुअली अल अक्सा मॉस्क है. दिस वन इज अल अक्सा मॉस्क व्हिच रिमेन्स इन न्यूज अ लॉट ऑफ टाइम. कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये वाला अल अक्सा मॉस्क है. नो, दिस वन इज अल अक्सा मॉस्क. ये डोम ऑफ रॉक है. ठीक है, ये वाला दिस वन इज देयर. फिर एक वॉल होता है, ये वेस्टर्न वॉल है. ये भी आई थिंक क्रिश्चियन रिलीजन में कुछ स्पेशल इसका सिग्निफिकेंस है, आई गेस.
एंड आई थिंक जुडाइज्म में भी कुछ सिग्निफिकेंस इस वॉल का, इस दीवार का, वेस्टर्न वॉल का है ना. सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. ओके, यस. So let's move on further. अब ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर आर्टिकल थी. We have discussed it so many times, है ना. Recently the RBI's monetary policy committee keeps policy rates मतलब ये रेपो रेट है ना. मैंने I have taught these things that how repo rate impacts inflation. This I have taught in the paid classes. पढ़ाया कि नहीं कि how the repo rate and statutory liquidity ratio, cash reserve ratio, these are changed to control the inflation, है ना. ये सब चीज मैं पढ़ा चुका हूँ. हाँ. So by not raising interest rate, तो interest rate नहीं बढ़ाया है ना. So RBI's monetary policy committee, मैंने बताया it's a 6-member committee. The chairman is the RBI governor, Mr. 𝗟𝗲𝗴𝗪 दास and all, है ना. So these things I have already taught in the paid classes. ठीक है. Okay, yes. So Governor 𝗟𝗲𝗴𝗪 दास underlined the RBI's willingness to resort to open market operation and all. OMO जो होता है ना, open market operation, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बाई एंड सेलिंग होता है. ठीक है. इसी से रेपो रेट चेंज होता है. ठीक है. रेपो रेट जो ट्रांजैक्शन होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में होता है. ठीक है. जैसे हमने बताया था ना कि बैंक्स जो है लोन देती है या बैंक्स लोन लेती है आरबीआई से, है ना. सो दिस इज एक्चुअली डन थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. दैट्स कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओके, एक ओपिनियन में आर्टिकल थी भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप की, रिविजिटिंग द रेल गेज डिबेट. अब इसको डिबेट को अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल इज सेइंग द ब्रॉड गेज इज 1.676 मीटर विद रैपिड रेल प्रोजेक्ट सिस्टम इन दिल्ली एंड ऑल. अब देखो ये होता क्या है. देखो जो रेल का जो पटरी होती है, सो द गेज, इसको हम लोग ये कहते हैं, पटरी जो होती है वो 3 तरह की जनरली होती है. सो दिस इज कॉल्ड एज नैरो गेज. ठीक है. ये 1 मीटर से कम होता है, लेस देन 1 मीटर. ठीक है. दिस वन इज कॉल्ड एज मीटर गेज. ओके. And this is called as wide gauge. ठीक है. तो क्या लिखा ना इन लोगों ने, ब्रॉड गेज भी कहते हैं. हाँ, वाइड गेज या ब्रॉड गेज कह दो. ब्रॉड गेज इज अ मोर बेटर टर्म. ठीक है. नैरो गेज वगैरह कहां पे चलती है? अब शायद यू विल फाइंड इट इन जू. अगर आप अपने शहर के जू में गए हो, या टॉय ट्रेन जहां पे चलती है बहुत जगह, यू विल फाइंड इट देयर. ठीक है. टॉय ट्रेन जो चलती है नाउअडेज. देन मीटर गेज जो होता है अभी भी आई थिंक कुछ प्लेसेस में है, सम रिमोट एरियाज में आई गेस. आप इसको पता करना. सम प्लेसेस में यू विल फाइंड, परहैप्स शायद दार्जिलिंग वगैरह में, उस सब रीजन में, मे बी दार्जिलिंग, शिमला, यू विल फाइंड दिस मीटर गेज. ठीक है. जो छोटा, वो भी टॉय ट्रेन ही टाइप होती है. और जो नॉर्मल चलती है, यानी जिसमें नॉर्मल लोग ट्रैवल करते हैं, हम लोग ब्रॉड गेज कहते हैं. ठीक है. तो मीटर गेज तो 1 मीटर चौड़ी होता है. इसका जो चौड़ाई होता है, मतलब विड्थ जो होता है, 1 मीटर होता है. इसका लेस देन 1 मीटर होता है. और इसका जो होता है मोर देन 1 मीटर, देखो लिखा है ना 1.676 मीटर. ठीक है. सो यही सब वो बता रहे हैं. तो इसमें कुछ डिबेट वगैरह है. मैंने एक बेसिक चीज बता दी है कि ये 3 तरह की पटरी होती है, बट दिस इज द मोस्ट फेमस, जो मतलब स्टैंडर्ड है. दिस इज द स्टैंडर्ड वन. ठीक है. मतलब जो हर जगह पूरे इंडिया में बिछा हुआ है. ये सब कहीं कहीं पे मिलेगा आपको, है ना. ओके. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. ठीक है. तो इसी पर उन्होंने कुछ अपना लिखा है आर्टिकल. सो यू कैन गो एंड रीड अबाउट इट. अच्छा, गो एंड फाइंड आउट जो मेट्रो रेल होता है. देखो, मोस्ट मेट्रो रेल आर बेस्ड ऑन एसजी मतलब एसजी का तब लिखा स्टैंडर्ड गेज, तो 1.435 मीटर विड्थ इनको ने लिखा. तो मेट्रो का अलग होता है, इस तीनों से भी अलग होता है. ठीक है. इसकी विड्थ. ओके. हाँ, यस. सो गो एंड जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. इसको एक बार पढ़ लेना अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड. हाँ, ठीक है. ओके. नाउ इजराइल गाजा वॉर, थाउजेंड्स डेड, थाउजेंड्स डिस्प्लेस्ड. तो उन्होंने कुछ फैक्ट्स वगैरह बताए हैं, जैसे कि इन द पास्ट की डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स इफ यू सी इट केयरफुली. सो पैलेस्टीनियन फैटलिटीज मतलब डेथ्स, और इजरायली फैटलिटीज. तो अगर आप देखोगे इन द लास्ट फ्रॉम 2008 टिल नाउ, सो इन द पैलेस्टीनियन फैटलिटीज आर हाई एज कंपेयर टू इजराइल फैटलिटीज. सिर्फ ये वाला अगर छोड़ दो, मतलब जो रिसेंट वन which happened. Otherwise, if you see in the past, the Israeli deaths have been very less as compared to the Palestinian deaths. You can see it here. This is the chart from United Nations Office of Coordination of Humanitarian Affairs. ठीक है. एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. Since 2008 इन लोगों ने अपना नंबर्स वगैरह दिया है. ओके. नाउ व्हाट कॉज फ्लड इन सिक्किम. आई होप यू आर अवेयर. मैंने ये टर्म भी बताया था, GLOF का, हमको अभी भी याद है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड. ओके. एंड आई हैड शोन यू द इसरो मैप ऑल्सो. इसरो ने जो फोटो खींची थी वो भी मैंने दिखाया था. साउथ लोहाना ग्लेशियर इज देयर. ओके. उसमें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है दैट गॉट डैमेज्ड एंड ऑल. ओके, है ना, तीस्ता रिवर पर. आई हैव टोल्ड यू दैट देयर इज तीस्ता रिवर एंड ऑल.
तीस्ता ऊर्जा, the second biggest run of the river hydro power project and all. Okay, so 1200 megawatt project dam washed away. So yeah, of course this is very much in the news. Okay, ना चोंगथांग मांगनांग ये सब है ना, we have discussed it. तो इसमें एक रिवर है तीस्ता रिवर, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है. In fact there is a we have some तीस्ता रिवर डिस्प्यूट भी कहते हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. कुछ शेयरिंग, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, उस पर कुछ डिस्प्यूट वगैरह भी होता रहता है. सो दिस आल्सो कम्स इन द न्यूज, ठीक है. सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. नाउ द नेक्स्ट वन इज सिक्किम फ्लैश फ्लड 32 बॉडीज रिकवर्ड, सर्च कंटिन्यूज एंड ऑल. सो वी हैव डिस्कस्ड इट एंड ऑल की कुछ बॉडीज को रिकवर किया गया एंड ऑल. सो जस्ट गो एंड रीड इट, मतलब इसको फॉलो करते रहना. द नेक्स्ट वन इज व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंडियन एयरफोर्स डे? योर ऑप्शंस आर 1st October, 9th October, 8th October, 11th October. And why? रीजन भी बताओ, क्यों इंडियन एयरफोर्स डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? एनीवन? बस एक आंसर आया है. सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. यस, द राइट आंसर इज 8th October. सी इज द राइट आंसर. जोया खान इज राइट. यस गौरी, सी इज द राइट आंसर. हाँ 91st एनिवर्सरी. यस वेरी गुड जोया खान. संजय यू ऑल आर राइट. स्वप्निल यस. हाँ 8th October 1932 को, मतलब ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, ब्रिटिश इंडियन एयरफोर्स का कुछ नाम था उस टाइम पर. हाँ बिकॉज ब्रिटिश एम्पायर का था, ब्रिटिश एयरफोर्स या ब्रिटिश इंडियन एयरफोर्स समथिंग वाज देयर. At that time it was established. So after the independence, now it is called as Indian Air Force. Okay. तो चूंकि 8 अक्टूबर को बनाया गया था, since it was formed on 8th October, we celebrate 8 October as Indian Air Force Day. ठीक है. Okay. And after India gained the independence, the name Royal Indian Air Force was kept and served the name of Dominion and all. ठीक है, ये सब बता रहे हैं. फिर 1950 में Royal word was removed. ठीक है. सो आजादी के बाद रॉयल इंडियन एयरफोर्स नाम रखा गया, लेकिन 1950 के बाद रॉयल वर्ड हटा दिया गया. ठीक है, सिर्फ इंडियन एयरफोर्स रहने दिया गया. ओके, इसका मोटो क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स? कैन एनीवन टेल मी? एंड द मोटो हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच बुक, व्हिच रिलीजियस बुक? ये कोई बता सकता है? सो एक्चुअली क्या ये अब बताइए. ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर इट. इंडियन एयरफोर्स अनवील्स न्यू इंसाइन एज इट मार्क्स इट्स 91st एनिवर्सरी. ये मतलब फ्लैग हो गया. ठीक है, इसका मतलब फ्लैग होता है. देखो ये है द न्यू फ्लैग. ठीक है, सो इनॉग्रेटेड बाय इंडियन एयरफोर्स चीफ. एंड हु इज द चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? द चीफ ऑफ एयरफोर्स इज एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी. ठीक है, okay, so just remember it. So 91st anniversary we have celebrated recently, so just have an idea about it. In Prayagraj. ठीक है, Prayagraj, Bamroli in Prayagraj. Okay, हाँ. Navam Spasham Deeptam, very good. हाँ, so Navam Spasham Deeptam, touch the sky with glory. इसका English translation है, taken from Bhagavad Gita. ये सब पूछा सकता है. Yes, Nandita, Zoya, Nandana, Gauri Sethi, Nandita. Yes, good. हाँ, Mr. Vivek Ram Chaudhary और Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary is the इंडियन एयरफोर्स चीफ. ठीक है, ओके. फिर एक है आदित्य L1 के बारे में है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. दैट स्पेसक्राफ्ट इज हेडेड टुवर्ड्स लाग्रांजे पॉइंट 1 L1. ये मैंने बताया है कि इट विल बी इंस्टॉल्ड एट L1 व्हिच विल बी 1.5 बिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम एक्चुअली अर्थ एंड ऑल. ठीक है, ये सब मैंने L1 L2 L3 L4 L5 ये सब लाग्रांजे पॉइंट बताया है. ठीक है, सो यू शुड बी नोइंग इट. Student can choose to take board exams once or twice a year. ठीक है, so education minister and all is there. इसको थोड़ा सा पढ़िएगा बिकॉज इट इज ऑल्सो इन लाइन विद द आइडिया ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. इसको आप थोड़ा सा अपने से पढ़ लीजिएगा. ठीक है, सो गो एंड रीड इट. हाँ, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. ठीक है, मैं और भी कुछ कोर्सेज लाऊंगा, कुछ और क्वेश्चंस लाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें आपको समझनी है. पहले ये कि आज मंडे है, सो 6 PM पे वी विल बी हैविंग रिविजन सीरीज, है ना. लेकिन ये ऐप पर होगा, आपको पता है ना. ठीक है, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. विल बी हैविंग सम मोर बेटर क्वेश्चंस. मैं और क्वेश्चंस को अच्छा क्वालिटी के क्वेश्चंस लाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, एंड विल बी हैविंग सम रिविजन सीरीज आल्सो बिफोर द एग्जाम. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू एवरीवन. प्लीज प्रेस द लाइक बटन, share this video and subscribe to our channel. Thanks for watching. Have a nice day.